क्या देखा आपने? यशवंत बेटा बताइए क्या देखा आपने? कोई एग्जांपल दें, क्या चीज देखी आपने कल की वीडियो में बेटा? नहीं देखी ना बेटा आपने? बेटा यू हैव टू सी दैट, फिर आपका चैप्टर नहीं तो इनकम्प्लीट रह जाएगा. ओके, सो I'll just go through it quickly bete. We are doing a chapter of landforms, and last week we did plateaus bete. Last week we did plateaus bete, और ये हम एग्जांपल दी थी आपको plateaus की बेटे कि ये एक नॉर्मल जमीन पे एनी स्पेस बेटे जो जरा सा राइज हुई है नॉर्मल स्पेस से, उसको हम प्लेटू कहेंगे. एंड यू सी दिस एग्जांपल, not all plain on land is above the ground, but some part of it bete, तो उसको हम plateau कहेंगे. Balochistan plateau is one example that is given in your book bete. And then this I've given you one more picture from the from myself bete. We talked about hills yesterday, and then give you an example here. You what you see behind the Faisal Masjid, it's a hill bete. This is a, you can call it a small mountain bete. It is less in altitude and less steep than a mountain, but it has a summit, a peak, just like a mountain bete. एक जो top होती है, जिस तरह mountain की top है, इस तरह एक hill की भी top है, लेकिन just one second. लेकिन इसकी हाइट और इसकी स्टीप कम होती है, तो दिस इज कॉल्ड अ हिल. द एग्जांपल इज द मार्गरा हिल्स, यू सी राइट बिहाइंड द फैसल मस्जिद. Ibra beti, I'm waiting for them to join back, so then I'll start. Just one second, okay? So we'll move forward बेटे. हमारे जो डेजर्ट्स हमने कल पढ़ लिए थे बेटे इब्रा, ठीक है? हम डेजर्ट पढ़ लिया था, हमने ओएसिस पढ़ लिया था. This is the picture of an oasis. You know exactly what a desert is बेटे, ठीक है? कैमल के बारे में हमने आपको बताया कि कैमल जो है it stores water in its hump बेटे, and then it's able to travel a long distance because it has saved water in the hump. He uses this water, and it survives for a long time. Okay. Let's go to Coniferous Forest now. This is the next topic. Forest is the next topic in your book, and we are going to read about Coniferous Forest. Forest on slopes of mountains and hills with coniferous and evergreen trees are known as coniferous forests. These are the forests on slope of mountains and hills. Okay, the mountains coming down on the slope. If you have trees and vegetation, this is that forest is called a coniferous forest, or coniferous forest is coniferous trees or evergreen trees. This is one example of coniferous trees. Coniferous trees have needle-like leaves. Their leaves are sharp and needle-like, thin and long, just like a needle. Some trees remain green throughout the year and are called evergreen. Just because they remain green throughout the year, this is why they're called evergreen. Means they never shed their leaves. उनके पत्ते कभी गिरते नहीं हैं, वो हमेशा green रहते हैं. Temperature is usually cold in winter and absolutely and moderately warm in summer. It's cold in winter and not very hot in summer, moderately warm in summer. So these are called coniferous forest, and this is one example of the tree that is grown in coniferous forest. This is again from the book. Then the next thing is tiger. This is also a forest, but the coniferous evergreen forest, but this grows mostly in the northern hemisphere. We've read about equator के दोनों साइड पे हेमिस्फीयर्स होते हैं, southern hemisphere and northern hemisphere. The tiger forest, it also has coniferous and evergreen trees, but they are grown in the subarctic land in the northern hemisphere.
It is the largest biome on Earth, covering 11.5% of the Earth's land area. But this taiga is huge. But it's massive. बहुत बड़ा है टाइगर, बहुत बड़ा होता है. Biome का मतलब है, मैंने बताया था, biome is an area that is classified according to the plants and animals that live there or the plants that grow there. बेटे ठीक है, उस हम एक एरिया को अपनी खास उसकी क्लासिफिकेशन से बायोम कहते हैं. हम उस बायोम का मतलब है कि वहाँ पे कौन से खास किस्म के प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. तो टाइगर जो है, इट इज अ मैसिव बायोम. इट इज कंप्राइजेस 11.5% ऑफ द अर्थ्स लैंड एरिया. तो दुनिया में जितनी भी जमीन है, खुश्क जमीन है, उसमें से 11.5% जो है उसको हम टाइगर कह सकते हैं. It has vegetation. Vegetation means the plants and the trees that grow there, they can survive cold weather. Because northern hemisphere में it's generally it's more cold bit. So it has vegetation that can survive cold weather. Coniferous trees grow well in taigas. These trees that I've shown you, they grow well in taiga. Easily grow करती हैं बेटे. Taiga has a cold climatic condition in winter and moderately warm summers. Not very warm, moderately warm summers. थोड़ी गर्मी की summers में, और winter is cold बेटे. The foothills of the Himalayas and the Karakoram. The foothills of the Himalayas and the Karakoram range are tigers in Asia. एशिया में टाइगर्स कहाँ पर है, थोड़ा जो है, जो हिमालय और कराकोरम की जो फुट रेंज पे, जो उनके बिल्कुल नीचे जो फॉरेस्ट है, उनको हम टाइगर कह सकते हैं. ठीक है. Any question बेटे? We have done Ibra, Yashad, Night, turn your camera on बेटे. Hurry up बेटे, so we can start. Minahid, hurry up बेटा. Ibra, you too बेटा, turn your camera on. Ibra बेटा, turn your camera on बेटा. Any question बताइए बेटा, फिर हम आगे चले. Anyone? Any question बेटा? कुछ पूछना है आपने? No, sir. Okay, Yashad, you बेटा, do you want to ask anything? No. Okay, बेटा. So we have done forest, coniferous forest, and tiger बेटे. Please read the book बेटे. After the class, read the book so you एक तरह से आपकी रिवीजन हो जाए concept. Next is बेटा rainforest. Next concept is rainforest. Rainforests are jungles of dense vegetation that receive high annual rainfall. Okay? These are the forests mostly around the equator, and these are jungles of dense vegetation. Dense matlab, Minahed, you're not paying attention, beta. Minahed, you're not paying attention, beta. These are jungles of dense vegetation that receive very high annual rainfall. Dense का मतलब है बेटे बहुत thick vegetation है. Trees एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ trees हैं, plants हैं, कोई चीज कोई space भी खाली नहीं है. Very thick vegetation, मतलब बहुत ज्यादा trees और plants हैं वहाँ पे. This is called dense vegetation. They receive, why is it so dense बेटे? Because rainforests receive very heavy annual rainfall बेटे. Throughout the year बेटे rainforest ऐसे area में है जहाँ पे almost throughout the year rain hoti rehti hai, because since they have high rainfall and rain helps in the growth of vegetation, they are very rich in trees and plants, and they have dense vegetation bete. They are mostly found around the equator bete. Sabko equator ka pata hai na bete? Equator is an imaginary line that runs across the center of the earth. It's not a fixed line, it's not an actual line. हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए एक लाइन एक सोच ली कि ये अगर लाइन हो, ये इसको ये अर्थ है, इस दरमियान में वो लाइन है, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर है. ये आप सब लोगों ने क्लास 4 में पढ़ा हुआ है, राइट? पिक्चर आपकी इक्वेटर की पिक्चर याद है सबको बेटा? लेट मी शो यू फॉर दैट फर्स्ट.
can see the picture now bete. See this red line equator bete, this is a imaginary line, ये actual line नहीं है. हमने ये कहा हुआ है कि हमने अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. इस लाइन से ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है बेटे. ठीक है, तो इस लाइन को इक्वेटर कहते हैं. रेन फॉरेस्ट जो है दिस रन्स अक्रॉस द सेंटर ऑफ द अर्थ, बिल्कुल सेंटर में है बेटे. ये जो रेन फॉरेस्ट है बेटे इस लाइन के आसपास है, इस लाइन के आसपास ऊपर नीचे करके क्लोज टू दिस प्लेस, near to this place are रेन फॉरेस्ट बेटे. Climate is hot and humid all the year round बेटे. ठीक है, it is hot and humid all the year round. And you've also noticed बेटे यहाँ पे हमारे पास लाहौर में जब बारिश होती है तो बारिश के बाद sometimes it gets humid here in Lahore बेटे. ठीक है, आपको एकदम पसीना आने लग जाता है. The the climate of rainforest is hot and humid all the year round. They are very rich in wildlife and vegetation. Very rich in wildlife because of the rain. Uh, it suits wildlife and vegetation to live in these areas. Wildlife ko bete, because it is rain, bete, so wherever there is rain, there is going to be a life around that place wherever there is a lot of rain bete, and vegetation also bete. जहाँ पे बहुत बारिश होगी वहाँ पे trees और plants easily grow करेंगे. The name rainforest comes from the fact that thick vegetation of trees covers most of the land. Dense vegetation है बेटे, बहुत ज़्यादा trees हैं. ठीक है, तो जब बारिश होती है बेटे trees को touch करके water filters through the trees and sprays towards the vegetation below. ठीक है, इतनी ज़्यादा trees हैं कि बारिश जो है सीधे ground पे नहीं आती. बारिश उन trees पर आती है और tree से एक spray की तरह नीचे ground पे जा रही है. ठीक है, इस वजह से उसको हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं. जैसे वो ट्रीज से नीचे रेन हो रही है तो ट्रीज के नीचे जो वेजिटेशन है उनको ऑलमोस्ट जैसे रेन हो रही है, इसको इसलिए रेन फॉरेस्ट कहते हैं बेटे. लाइक ए स्प्रे फ्रॉम द ट्री, लाइक ए स्प्रे द वाटर गोज डाउन बेटे. ठीक है, तो दिस इज अ रेन फॉरेस्ट. नोटिस बेटे द ट्रीज आर डिफरेंट देन द कॉनिफरस फॉरेस्ट जो हमने पहले पढ़े. इसके नीडल लाइक ट्रीज हैं, इसके ट्रीज और हैं बेटे. इसके ट्रीज वो हैं जिस तरह हम ट्रीज नॉर्मली दैट वी नो ट्रीज बेटे. These trees are different. They don't have pointed leaves बेटे. These are normal. These are trees that we see otherwise बेटे. ठीक है, तो ये coniferous जो trees हैं हमारे पाकिस्तान में आपको generally कम नजर आते हैं, लेकिन ये these trees normal trees जो हम आप जिसको आप used to देखेंगे रेन फॉरेस्ट में आमतौर पे ऐसे trees होते हैं बेटे. Amazon बेटे is the largest rainforest. Amazon in Brazil bete, is the largest rainforest in the world. It is a huge rainforest. It is the largest rainforest in the world bete. Any question bete? You want to ask anything? Okay, open your books bete. Open your books. Open page number 4. We've read bete. You see the heading natural vegetation on page number 4. यहाँ से पहले यहाँ पे we were reading about landforms and then natural vegetation के we define the word biome. Biome means it's classified as a place which where similar plants can grow. एक किस्म के plants grow कर सकते हैं उसको biome कह सकते हैं. उसमें then we read about first about deserts की. सबसे पहले हमने आपको deserts के बारे में बताया था और उसमें हमने कहा था क्या grow कर सकता है, सिर्फ cactus plant grow कर सकता है. Minahid and Yashir, if you see the lecture from yesterday, only cactus plants can grow. Mostly cactus plants can grow in deserts bete. Okay, after deserts there was oasis bete on page number 7 bete. You see oasis on page number 7 and here is a picture of oasis bete. Here is a picture of oasis. This is an oasis bete. It is a place in desert where water is found and there is vegetation around that place. This is called oasis bete. This is exactly a picture of oasis. All around is desert and in the darmiyan में थोड़ी सी जगह पे पानी है, बाकी सब जगह पे desert है.
ओएसिस के बाद हम डेजर्ट वेजिटेशन की बात की कि डेजर्ट में क्या ग्रो कर सकता है, कैमल्स हैं जो वहाँ पे रह सकते हैं, ये कैक्टस प्लांट्स वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद you see on page number 7 you see forest, there coniferous forest, there tiger and there is rainforest बेटे। उसके बाद जो टॉपिक है आपका ग्रासलैंड है, ठीक है, ग्रासलैंड है। और this the last topic of your page बेटे। This will finish next time grassland, tropical grasslands, polar regions and tundra बेटे। ये आपके दो ये बायोम्स हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा and then you do the exercises and you already have the questions। सबके पास क्वेश्चंस है ना बेटे? सबके पास क्वेश्चंस है ना बेटे? Ibrahim, Minahin and Yashid बेटे, you have the question answers? You have done chapter 1 in your copies? Chapter 1 किया आपने कॉपी No, पे? sir. I don't find question answer of unit 1. Okay, I'll send you the question so you do this. You have the copy? Yes. Okay, I'll send you chapter 1 again to complete the chapter in your copy. Yashid, you too, and Ibrahim, you too बेटे, complete chapter 1 in your copy. Sir, आपने कॉपीज भेजी है चेकिंग के लिए बेटा? सर जब क्वेश्चन No, आंसर्स sir. आए थे, सर जब जी क्वेश्चन बेटा। आंसर्स आए थे मेरे पास स्कूल की कॉपी नहीं थी, तो मैंने रफ कॉपी पे किए थे। मैं अब मिल गई आपको स्कूल की कॉपी? यस, अब मिल गई, अब मैं स्कूल की कॉपी पे Sir. बेटे मैं आपको दोबारा भिजवा रहा हूँ चैप्टर 1 बेटे। Sir, I will. यस बेटा। Sir, I will see copy of SST if I will buy from school. Whenever you come to school, get a copy from school and complete this work बेटे। This work has to be done and has to be checked बेटे। I'm sending you the question answers again बेटे। Okay बेटे? That's all Sir, we have for I today बेटे। also not have copy. बेटे come to school and get a copy बेटा। Visit the school and come. Okay. Did you submit other copies बेटा? English, Urdu, Science, Islamiyat, Maths. Did you submit other copies in school or no बेटा? No, sir, not now. बेटे आपकी कॉपीज रह जाएंगी, सबकी कॉपीज चेक हो रही हैं आजकल बेटे। तो you will your copies will remain unchecked बेटे। Ibra, did you submit your copies? Okay, sir. Okay, ठीक है बेटे। I will. अल्लाह हाफिज बेटे। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. Allah Hafiz.